बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामियात लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक कुछ अहम मालूमात जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम इज़ आल्सो नोन एज अव्वलुल बशर, अव्वलुल अंबिया एंड सफ़ीउल्लाह। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, इसलिए उन्हें अव्वलुल बशर कहा जाता है। और नबूवत के सिलसिले का आगाज़ भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था, इसलिए उन्हें अव्वलुल अंबिया भी कहा जाता है। शीस अलैहिस्सलाम वाज द सेकंड प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आफ्टर आदम अलैहिस्सलाम। शीस अलैहिस्सलाम वाज द यंगेस्ट सन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। शीस अलैहिस्सलाम इज नोन एज सेथ इन द बाइबल। After Shees alayhi salam, Idris alayhi salam was blessed with prophethood. Idris alayhi salam is also known as Enoch in the Bible. Idris alayhi salam was the son of Cain, काबील। हज़रत आदम अलैहि सलाम का बड़ा बेटा काबील, इसने अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल किया था। हज़रत इद्रीस अलैहि सलाम काबील के बेटे थे। और रूए ज़मीन पर जो पहला इंसान कत्ल हुआ था वो हाबील था, और जो पहला कातिल था वो काबील। According to traditions, Idris alayhi salam was the first man to write with the pen. During Miraj, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam met Idris alayhi salam in fourth heaven. Idris alayhi salam is mentioned twice in Quran. He is mentioned in Surah Maryam and Surah Al-Anbiya. According to traditions, Idris alayhi salam was the first man to sew cloths. His profession was sewing cloths. According to traditions, Idris alayhi salam started the science of astronomy. After Idris alayhi salam, Nuh alayhi salam was blessed with prophethood. Nuh alayhi salam हज़रत शीस alayhi salam की नस्ल में से थे। हज़रत शीस alayhi salam हज़रत आदम के सबसे छोटे बेटे थे, और नूह alayhi salam उन्हीं की नस्ल से थे। Nuh alayhi salam was first Rasul, therefore he is called अव्वलुल मुरसलीन। यहाँ रसूल और नबी में फ़र्क ये है कि रसूल जो होता है वो एक ख़ास शरीयत के साथ आता है, लेकिन जो नबी होता है वो पहले से मौजूद शरीयत को लेकर आगे चलता है। हर रसूल तो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता, ना ही होता है। और जो रसूल होता है उसे अल्लाह ताला की तरफ से वही भेजी जाती है, इसलिए उन्हें रसूल कहा जाता है। इन दी होली कुरान 25 रसूल नेम्स आर मेंशन्ड। Nuh alayhi salam belongs to a group of prophets which is called Ulul Azam Anbiya. Meaning of Ulul Azam Anbiya is prophets of strong will. Ulul Azam prophets are 5. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Noah alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moses alayhi salam, and Jesus son of Mary alayhi salam. A surah of Quran carries the name of Nuh alayhi salam is called Surah Nuh. Quran also states that Allah chose Adam alayhi salam and Noah alayhi salam, the family of Ibrahim alayhi salam and the family of Imran alayhi salam above all people. Noah alayhi salam lived among an infidel nation which is called people of Nuh in Quran. People of Nuh worshipped idols called Wad, Suwa, Ya'ud and Nasr. The name of these idols are given in Surah Nuh of Quran. Wad was chief god of people of Nuh. It was also worshipped in Arabia later. Wad was shaped like a man. Suwa, second idol of people of Nuh, was shaped like a woman. It was also worshipped in Arabia. Ya'ud, third idol of people of Nuh, was shaped like a lion. Ya'ud, fourth idol of people of Nuh, shaped like a horse and was also worshipped in Arabia. Nasr, fifth idol of people of Nuh, was shaped like a bird. Nuh alayhi salam is known as Noah in Bible. When people of Nuh
did not submit to the preaching of Nuh alayhi salam, Allah commanded Nuh alayhi salam to build a boat. The boat built by Nuh alayhi salam is called Ark in Bible and Falak, which means the boat in Quran. According to traditions, a pair of every animal was on board on the boat built by Nuh alayhi salam. After building a boat, Nuh alayhi salam prayed for punishment of infidels. So people of Nuh were hit by a storm and flood. During flood, three sons of Nuh alayhi salam were on board on the boat of Nuh alayhi salam and were saved from punishment by Allah. According to traditions, names of saved three sons of Nuh alayhi salam were Sam, Ham, and Yafil. One son of Nuh alayhi salam refused to board the boat of Nuh alayhi salam and was punished by Allah. According to traditions, name of punished son of Nuh alayhi salam was Kinan. Wife of Nuh alayhi salam refused to follow the preaching of Nuh alayhi salam and was also punished by Allah. According to traditions, the flood continued for 40 days and 40 nights. According to traditions, Nuh alayhi salam first released a raven, which means crow, to assess the situation of earth after flood. After raven, Nuh alayhi salam released a dove or pigeon to further assess the situation of earth. After flood, boat of Nuh alayhi salam landed at Mount of Judi. Mount Judi is located in Turkey, also known as Kardu. After flood, only heirs of Nuh alayhi salam survived and populated the face of earth. हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं वो सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके छोटे बेटे शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, क्योंकि तूफ़ान नूह जब आया था तो जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आल औलाद, सिर्फ वही चंद एक लोग बचे थे, बाकी सारी इंसान जो थे वो इस दुनिया से ख़त्म हो गए। तो उन्हीं चंद बचे हुए इंसानों से दोबारा इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ है जो कि नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद थी। इसलिए इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम इंसान जो हैं वो शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। Because human race was survived by only heirs and children of Nuh alayhi salam, he is also known as Adim Sani and Abul Bashar Sani. क्योंकि तूफ़ान नूह के बाद जो इंसानियत थी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही इंसानियत का सिलसिला चला था, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम दोयम और अबुल बशर दोयम भी कहा जाता है। Nuh alayhi salam survived the flood, therefore he is called Najiullah. Najiullah means he who was saved by the grace of Allah. According to traditions, children of Sam populated the continent of Asia after flood. According to traditions, children of Ham populated the continent of Africa after flood. According to traditions, children of Yafis originated European and Turkic nations.